चेक करो बाबियो। भैया ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले आज जावा का काम करेंगे, तो अपन खोल लेते हैं ब्रेव ब्राउज़र यूट्यूब पे, एक न्यू टैब जो खुल जाएगा डेस्कटॉप पे, एक नोशन फाइल जाएगी अपने डेस्कटॉप पे, इसमें करेंगे ये साइड, यहाँ पे अपन एक बनाएंगे जावा IITM का फोल्डर, और फिर यहाँ पे अपन उसमें देंगे एक पेज होगा वीक मोबाइल, और जिसको अपन वीक में एंटर करके साइड में रख देंगे। चेक करो बाबियो, चेक करो। देखो भाई मुझे होता है ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहाँ, देखती है काफिर आकर किसका निशान, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहाँ, देखती है काफिर आकर किसका निशान, महफिल महफिल ये समा है कहाँ। अपन का गोल है कि जावा का पूरे 12th वीक तक अपन को इस वीक में निपटाना है, ठीक है। इसमें ट्यूटोरियल्स भी हैं क्या? काशिफ भाई के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, अगर आपको लिखना है, अगर आपको पता करना है कि मैं कहाँ जाऊँ, तो acegrade.in करके है, ये IIT मद्रास के बच्चों के लिए है। इसमें बहुत अच्छे नोट्स मिल जाते हैं, लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। अब ये नया फर्स्ट वीक में क्या पढ़ा है, तो फर्स्ट वीक में अपन अगर देखें इनके क्लासेस पे जाके, आप रिसोर्सेज में लेक्चर्स पे जा सकते हो जावा, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में इन्होंने पढ़ाया है अपन को प्रोग्रामिंग इज़ अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं इसके बारे में बताया है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन इज़ यूज इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली मीन्स कि आप अगर एक किसी भी चीज़ को असाइन कर दोगे वैल्यूज़, उसको इटरेशन करोगे, उसको ये करोगे, तो ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्शन के अंडर आती है। एक्सप्रेसेस आइडियाज़ इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, translate high level programming language into low level machine languages, ठीक है। बेसिक ये है, फर्स्ट वीक आपके इतना ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। बेसिकली उन्हें बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, एक मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कम्युनिकेट कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। किसी भी कंप्यूटर को अगर आप इंस्ट्रक्शंस देते हो तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ओरिजिनली डायरेक्टली कनेक्टेड टू आर्किटेक्चर, memory location store values, the register allows arithmetics, loads a value from memory M to register R, adds contents of register R1 and R2 to store the result back on R1, write the value in R1 to memory location M1। बेसिकली ये बता रहा है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अगर दो चीज़ों को ऐड करना हो तो कैसे होता है। सबसे पहले आप मेमोरी एम से रजिस्टर आर, तो आपको अगर मेमोरी हायरार्की पता हो तो सबसे ऊपर आता है अपना सेकेंडरी मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी, फिर आते हैं रजिस्टर्स, कैशे। ये जैसे जैसे नीचे जाते जाते हो आप लिस्ट में, वैसे वैसे ये महंगे होते जाते हैं।
तो ये अपन को ये बता रहा है कि मेमोरी लोकेशन जो होती है वो वैल्यू को स्टोर करती है और रजिस्टर जो होते हैं वो सिर्फ अरिथमेटिक्स करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप पहले मेमोरी लोकेशन से एक वैल्यू को उठाते हो और उसको रजिस्टर में डालते हो। फिर उसके बाद रजिस्टर R1 और R2 में वो दो वैल्यूज़ को जो आपने स्टोर कराया है उनको ऐड करते हो और फिर जो उसका रिजल्ट आता है उसको R1 वाले में वापस बैक करके आप रिजल्ट उनको R1 में स्टोर करते हो और जो R1 की वैल्यू है उसको मेमोरी लोकेशन M1 में स्टोर करके फिर उसको वो करते हो। ये टीडियस प्रोसेस है और एरर प्रोन है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन इज यूज्ड इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जैसे कि असाइनिंग वैल्यू टू नेम्ड वेरिएबल्स, कंडीशनल एग्जीक्यूशन, इटरेशन, फंक्शंस, एग्रीगेट डेटा स्ट्रक्चर सच एज एरेज, लिस्ट एंड डिक्शनरीज। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? जैसे आपने कोई एक वेरिएबल बनाया है, जैसे लेट वेर इक्वल्स टू 3, तो आपने एक वेरिएबल लिया, उसको वेर लेट वेर तो सब एक ही होता है, वेर वेर नंबर इक्वल्स टू 3, तो आपने एक नंबर लिया, उसको 3 वैल्यू असाइन करी। कंडीशनल एग्जीक्यूशन क्या होता है? इफ एज इज अबव 18 ड्रिंकिंग अलाउड, तो ये कंडीशनल एग्जीक्यूशन है। फिर उसके बाद इटरेशन क्या होता है? मान लो अपन के पास 500 वर्ड्स की एक लिस्ट है और अपन को ये पता करना है कि ये वर्ड एक नाउन है प्रोनाउन है, तो आप उसको इफ नाउन डू समथिंग, इफ प्रोनाउन डू समथिंग, इफ एडवर्ब डू समथिंग, तो ये उसको इटरेशन कहते हैं। तो इटरेशन इसी का मतलब होता है। फिर उसके बाद फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स, रिकर्जन। तो ये फंक्शन प्रोसीजर रिकर्जन क्या है? फंक्शंस होता है कोई भी प्रोसीजर इन द सेंस, मान लो एक आपको काम करना है कि डेटा को उठाना है, डेटा में 2 प्लस करना है और उसको आगे बढ़ाना है, तो ये एक फंक्शन हुआ। अब इसको आप बार बार लिखने की जगह एक एक बार लिख के बार बार यूज़ करना चाहो तो उसे फंक्शन कहते हैं। फंक्शन इज प्रोसीजर्स दैट आर डिफाइंड इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन ऑन द अदर हैंड इस, आपने एक आंसर लिया, उस आंसर को आपने दूसरे क्वेश्चन में डाला, उससे जो आंसर आया उसको आपने दूसरे क्वेश्चन में डाला। बेसिकली आप फर्स्ट आंसर को सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को सेकंड क्वेश्चन के इनपुट में ले रहे हो और उसका जो आंसर आ रहा है उसको थर्ड क्वेश्चन में इनपुट ले रहे हो, ऐसे चेन बनाते जा रहे हो, चेन बनाते जा रहे हो, चेन 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 चेन। तो उसे रिकर्जन कहते हैं। रिकर्जन को मैं आपको अभी जब अपन सीखेंगे तो और अच्छे से समझाऊंगा, बट आप अभी जितना समझना चाहें वो ऐसे समझ सकते हैं कि आपने हाफ का हाफ का हाफ का हाफ लेना चाहा तो ये रिकर्जन होता है। 1 का हाफ इज हाफ, हाफ का हाफ में आप पहले 1 का हाफ को इनपुट लोगे, फिर हाफ को आप 1 के हाफ का हाफ बोल सकते हो। ऐसे आप एक बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटी 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 बहुत सारी प्रॉब्लम्स में तोड़ सकते हो और फिर उनके जब उनको लास्ट में जोड़ दोगे तो 1 ही बन जाएगा। तो 1 हाफ का हाफ का हाफ का हाफ, 1 हाफ, 3/4, 1/4, 1/8, 1/16, इनको पूरा ऐड करोगे तो 1 ही बनेगा। तो आपने एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी 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 भाग में तोड़ दिया, उसे कहते हैं रिकर्जन, तोड़ना और जोड़ना। फिर उसके बाद एग्रीगेट डेटा स्ट्रक्चर। एग्रीगेट डेटा स्ट्रक्चर क्या है? मतलब एक एक साथ बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करना। एरेज क्या करती हैं? एक साथ बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करती है। लिस्ट क्या होती है? एक साथ बहुत सारी चीज़ों को। डिक्शनरी क्या होती है? बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करती हैं। अब एरे, लिस्ट और डिक्शनरी तीनों अलग डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, तीनों के काम अलग है, तीनों के यूजेस अलग है, तीनों को अलग अलग जगह यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अपन लेते हैं एक्सप्रेस सच आइडियाज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लो लेवल मशीन लैंग्वेज। ठीक है भाई, आप कोडिंग से क्या करते हो? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल मशीन लैंग्वेज में यूज करते हो। कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर अलग होता है, इंटरप्रेटर अलग होता है। अगर अब आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो कि पाइथन एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ट्रेड ऑफ एक्सप्रेसिवनेस फॉर एफिशिएंसी, एक्सप्रेसिवनेस और एफिशिएंसी। अगर आप सी प्लस प्लस में कोई कोड लिखते हो और पाइथन में कोई कोड लिखते हो तो पाइथन में वो बहुत इजी दिख दिख के लगेगा आपको कि अरे ये तो बहुत ही इजी है, और सी प्लस प्लस में वो काफ़ी आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या लिखा हुआ है। बट सी प्लस प्लस वाला जब आप कोड रन करोगे तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ रन होगा रेदर देन पाइथन। तो इसे कहते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ मतलब होता है किसी एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को नेगलेक्ट कर देना या कम कर देना, कि बेसिकली ये इक्विलिब्रियम है, अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो वो ऊपर हो जाएगा। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको एक्सप्रेसिवनेस कम करनी पड़ेगी, एफिशिएंसी कम करोगे तो एक्सप्रेसिवनेस बढ़ जाएगी, ये होता है।
लेस कंट्रोल ओवर हाउ द कोड इज मैप टू एन आर्किटेक्चर। अगर आप कोई कोड को आर्किटेक्चर में मैप करते हो, ये तो क्या पता क्या लिखा है। बट फ्यूअर एरर्स ड्यू टू मिसमैच बिटवीन इंटेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, ये है थोड़ा मेन अगर आपको पढ़ना है तो। स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग दो तरह की होती है, एक इम्पेरेटिव होती है, डेक्लरेटिव होती है। इम्पेरेटिव जो डिज़ाइन होती है, ये आप अभी अगर लेक्चर से पढ़ने जाओगे आईआईटी मद्रास के, तो बहुत ही सड़ा पढ़ाया हुआ है। एक सेकंड, मैं ज़रा वो चेंज कर दूँ क्या? हाँ, एक तो मैं यही सेम सेम चलाया जा रहा हूँ अब से। कोई बात नहीं भाई। इम्पेरेटिव डिज़ाइन और डिक्लेरेटिव डिज़ाइन दो तरह की होती है। इम्पेरेटिव डिज़ाइन जो होती है, दैट शोज अस हाउ टू कंप्यूट, दैट गिव्स अस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑन व्हाट इज टू बी डन। और डेक्लेरेटिव डिज़ाइन जो होती है, वो दैट शोज अस व्हाट द कंप्यूटेशन शुड प्रोड्यूस, often explicit inductive structures expressed in terms of smaller computation, typically avoid using intermediate variables, combination of small ट्रांसफॉर्मेशन इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अपन इसमें देखते हैं कि इनने क्या एग्जांपल दिए हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को बोला है ऐड वैल्यूज इन अ लिस्ट। अगर आप एक लिस्ट दे रखी है, ये लिस्ट अपन ने डिफाइन कर दी, अब उसमें वैल्यूज ऐड करनी है। तो अपन ने इम्पेरेटिव में क्या किया, सम इक्वल्स टू जीरो फॉर एक्स इन एल, सम प्लस इक्वल्स टू एल रिटर्न सम। तो अपन ने एक लिस्ट ली, लिस्ट में एक सम जीरो लिया, उसमें अपन ने एक्स जितनी बार आया उतनी बार अपन ने सम में एक्स को प्लस कर दिया। इसमें इंटरमीडिएट वैल्यू ली है अपन ने, सम और एक्स, ये दो इंटरमीडिएट वैल्यू ली है। अब डेक्लेरेटिव में क्या होता है, इफ एल इक्वल्स टू लिस्ट रिटर्न जीरो, खाली अगर लिस्ट है तो जीरो रिटर्न करो, एल्स रिटर्न एल जीरो प्लस सम लिस्ट एल वन। तो इसमें इनने बेसिकली क्या रिकर्जन का यूज़ किया है कि अगर वो लिस्ट खाली है तो ज़ीरो रिटर्न कर दो, और अगर लिस्ट खाली नहीं है तो पहली जो लिस्ट है एल ज़ीरो प्लस सम लिस्ट। अब इसमें इसने रिकर्जन क्या किया, ये देखो, ये इसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया, इसे कहते हैं रिकर्जन। तो ये डेक्लेरेटिव हो गया। इम्पेरेटिव में क्या होता है, आपको हाउ टू कंप्यूट दिया रहता है, ये हाउ टू कंप्यूट दिया हुआ है। डेक्लेरेटिव में क्या होता है, आपको आंसर आंसर आपको बताना होता है, अच्छा ये ऐसा आएगा। और फिर उसके बाद आपको उसकी इंटरमीडिएट कोई वैल्यूज़ नहीं यूज़ करनी होती, आपको इंडक्टिव स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करना होता है, जैसे एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर कंप्यूटेशन। तो ये एक कंप्यूटेशन हो गई, ये एक कंप्यूटेशन हो गई, उसके बाद ये एक और कंप्यूटेशन हो गई, फिर उसके बाद जितनी लिस्ट होंगी, जितना लिस्ट का बड़ा साइज होगा उतना कंप्यूटेशन होता जाएगा। उसके बाद ये अपन ने समझ लिया कि बेसिकली इम्पेरेटिव इजी होता है, इजी लैंग्वेज में लिख के सिंपल सिंपल ब्रूट फोर्स। डेक्लेरेटिव क्या होता है, डेक्लेरेटिव थोड़ा आप उसको रिकर्जन डीपी वगैरह लगा के करते हो तो हो जाता है। डिस्क्राइब द डिजायर्ड आउटपुट बाय इंडक्शन। बेस्ट केस एम्प्टी लिस्ट है जीरो सम। इंडक्टिव स्टेप क्या है, एट द फर्स्ट एलिमेंट टू द सम ऑफ द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। ये फर्स्ट एलिमेंट है, सम ऑफ द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट को अपन ने फर्स्ट एलिमेंट से जोड़ दिया। ठीक है, नो इंटरमीडिएट वैल्यू। इसमें क्या इंटरमीडिएट वैल्यूज आई थी सम और एक्स, इसमें नहीं आएंगी। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर अप टू एन, ये एक क्वेश्चन है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर अप टू एन। और इसको अपन यूज करते हैं चैट जीपीटी का। अब देखो, अपन को सम ऑफ स्क्वायर्स के लिए क्या, अपन अगर डेक्लेरेटिव में क्या होगा, तो क्या सम ऑफ स्क्वायर्स इवन नंबर क्या है, 2 4 6 8 10। अब इसको स्क्वायर अगर अपन कर देते हैं, टू टू स्क्वायर, फोर स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर। तो बेसिकली अपन को क्या करना है, टू का फोर का स्क्वायर, ये 2 4 6 8 10, ये तो चलो अपन को फॉर्मूला ही बता दिया इसने। बट बेसिक इसका वो क्या है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये होता है। और अगर अपन उसमें से 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर निकाल दें तो ये हो जाएगा, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। बट अगर अपन को इसको कोड में लिखना है, कोड में अपन क्या लिखेंगे,
और एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें अपन लिखेंगे अगर आपको इंट आई है और आई इंट से आपको नीचे जाना है और नेम स्टाइल वैल्यूज कितना बड़ा है यार ये। Name types internally everything is stored as a sequence of bits. No difference between data and instructions. Let alone numbers, characters, booleans. For example, for a compiler interpreter code, it is its data. We impose a notion of a type to create some discipline. Interpret strings as high-level concept. Nature and range of values allowed. Operation data permitted on these values. Strictly type checking helps catch bug values. Name x and assign it in terms of factorial n minus 1, which is a smaller quantity to program. Check the even numbers from it. Map text this units of code, right? So we have this, treat this other part as a character. Okay. So this allows us to interpret these different. We can also, we could even restrict the, not just the nature, is it a integer, is it a float and all that, but even the range. We can say that this is a positive number, for instance. Okay. And finally, of course, once we have brought it into this mode where we know what type of value we are talking about, we have a range of operations which are allowed on them. So if they are numbers, we have some arithmetic operations. If they are booleans, we have some logical operations. If they are characters, we can concatenate and so on. So this is what we use to make sense out of the data. Okay, so that's the first level at which we need to use types, which is just to take a kind of undistinguished sequence of zeros and ones and make sense out of it. But we are also going to be interested in other aspects of this. So one aspect of this is that if we do this, it also helps us to find errors, right? So if we take something which is of two incompatible types and we try to apply an operation, then we can tell that we have done something wrong. So if we make mistakes, having types helps us find it and helps us find it early. So we could have an incorrect assignment or an expression which has a mixed type input which doesn't work. So if you take in Python, you try to take a list, right, and you try to add a number, it will say this is not correct. Okay. Now, one of the things that we will be focusing on in this course is something called object-oriented program, which comes out of this notion of an abstract data type. So remember that in addition to the simple types of int and float and that, what is really important for us when we write programs is to be able to collect them in groups. So most programming languages will give us these basic groups like arrays or lists, or in Python we also have dictionaries, which are essentially like lists but indexed by keys rather than by positions. But in a more general setting, we need to create data types to suit our requirements. So we can already create more complicated types like stacks, for instance. So a stack is a sequence, but unlike a normal sequence or an array or a list which I can manipulate arbitrarily, in a stack I can only work at one end. So I can allow push and pop. So I should think of a stack really as a vertical thing. Okay. So I push and I pop. So I'm not allowed to directly go and look inside this thing. So this is not allowed. So it is a sequence indeed, and internally it is represented as a sequence, and there is nothing that prevents me from physically doing it, but logically a stack only allows push and pop.
So this is what is called an interface. So we have some collection of values which are there in that data type, and we have an interface which tells us which buttons we can press, what functions we can operate on this. So one of the nice things about doing it this way is that you can separate the interface from the implementation. So how these buttons work and what they do. So this is again a question of declarative versus imperative in a different style. So when we say that push tells us the last value that was put into the stack, push puts a value into the stack and remembers the last value, and pop remembers the order and brings out the last value, right? How do we know which is first and which is last, right? So think of a priority queue. Remember, a priority queue is something in which you can insert elements, but each element has an associated priority or level. So the things come out not in the order in which they went in. So it's not like a queue where you're waiting to buy a ticket where the person who entered last leaves last, but it's rather based on some status of the person, right? So depending on their status, the next highest person in the queue who's waiting gets served next, regardless of when that person arrives. Elements as a sequence can maintain it in sorted order, unsorted order, and we can, depending on how we have done it, we have to scan and find the highest priority element and bring it out. Or we could be clever and use this clever tree structure, delete max, which are our two of an abstract data type, that if you make changes to the implementation, it should not affect their code, right? So there's a separation of concerns that comes. So object-oriented programming takes this notion of abstract data type as its central theme. So it organizes all of its work around abstract data types. So normally when we write programs, or we start learning how to write programs, we are always focusing on control flow. We write sequences of statements, we learn if statements, loops, and all that, right? And data is only something which is passed around in between these statements. So we write functions, pass data, and all that. In an object-oriented approach, we start with what are the data types that we need to manipulate, and then we define the functions which are appropriate for that. So we kind of reverse the priority by looking at data as a central idea, and functions are associated with the data on which they operate. So just as a concrete example, in Python, we have, for instance, in the list data type, we have this implicit function called sort, which we can invoke on a particular list by having this dot notation, versus the function sorted, which takes a list from outside and passes you back a list. So the second one, sorted, is a more conventional function. It takes input data, produces output data, whereas the sort function is attached to a given list. So every list in a theoretical sense has its own sort function, and it applies to that list. So you say, tell a list, go and sort your data. That's more or less how you tell the list to get itself sorted, rather than taking a list and passing it to a sort function. So this kind of illustrates the difference between the two styles, and we will explore it in more detail. So with that background, we can kind of get some idea of what this course is going to be about. So basically, we are going to look at some concepts in programming languages with a particular focus on object-oriented programming. We will also on the way look at things like exception handling. How do you deal with errors gracefully? Concurrency. If you have multiple things running at the same time, how do you make sure that they don't interfere with each other? Event-driven programming. This is what you use when you have to program applications which look for mouse clicks and other kind of user inputs and decide what to do next. Now, for all this, we will be studying these things in the context of Java. So Java will be our base language with which we will illustrate these concepts. So Java itself is an imperative language. It is a static type language. You have to declare your variables. It is object oriented by design, and it incorporates most of the features that we want to elaborate in a typical programming language concepts course. Now, this does not mean that Java on its own is perfect. No language is perfect. So we will also examine some of the decisions
Interpretation of data stored in binary notion. Hmm. Interpretation of data stored in binary in a consistent manner. Okay. Use sequence of bits as integer, float, and data. Nature is links allowed. Dynamic and static typing. Summary. यार इसके लिए तो अगर Let's take a closer look at types in programming languages. So why do we need types? So the first thing we said was that the storage in a computer is all binary. We only have binary digits, zeros and ones. So everything is a bit sequence. So there is no way of really recording the meaningful value there except by interpreting it through a type. So we have to decide whether this part of the memory should represent an integer or a float, what type of operations are allowed on it and so on. So just to convert this kind of uniform storage of bits into some meaningful concepts that we can use externally, we need to impose some notion of types. But the other part, which is also useful, is that by associating meaningful types with values, we can more carefully record what our intent is when we are programming. So we are programming at a level where we are dealing with some abstract concepts, and we want to reflect those concepts in the types that we are using. So for instance, if we are using a kind of geometric kind of application where we are dealing with points and so on, even though a point is just at a very concrete level a pair of floats, we might want to create an abstract notion of point as a type so that we can keep track of those variables that represent points and be able to read them off more clearly in our code. And of course, if we have a more complicated application, something like a banking application, we might have higher
order types, I mean types which are more complex in nature. So we might want a type to record a bank account, and we might want to record customer as a different type, and so on. So we will come back to this in this class. And the third thing that we mentioned earlier also, and we want to emphasize, is the role of types in finding errors. So if your code is statically typed, then even when you're reading it, you can look for errors in typing. And if it's dynamically typed, then you do it when you're running it. But in any case, type errors are a bit like dimension errors when you're doing, say, a calculation in physics. So supposing you want to know whether, so supposing you want to know whether velocity is actually acceleration times time, then you can say that the dimension of acceleration is meters per second squared and time is second. So then if I cancel, I will get meters per second, which is a correct dimension of velocity. Whereas it cannot be acceleration times time squared, because then the 2 seconds will cancel out, you'll have only meters. So this is a kind of sanity check that you can do in a physics equation to check that the quantities that you're multiplying actually go together to produce the quantity that you want. And in a similar way, type checking does that. Right? So let's look at the first part of it, which is associating a meaningful value with a bit sequence. So when I have a variable x in my program, I want to know, is it an int or a float or a scar or whatever it is, right? So how does the program determine this? How does the programming language indicate what kind of type we are working with? So in Python, this is done through the value which is associated with that variable, right? So Python uses what is called dynamic typing. So a name x does not in itself convey any type in Python until it has a value. So when we assign, for instance, x equal to 10, then at this point, x becomes a value of type int. So x on its own does not have any type. It's the value which is stored in x which determines its type. So Python allows us to take the same x and later on change its value to 7.5. And in this process, the type of x changes. So notice that x doesn't have a fixed type. Right? X's type depends on the value that it has. And in particular, when we start, the first time we see an x in our program, if it doesn't have any value associated with it, it has no type. So an uninitialized name in Python has no type, and this has a consequence, as we will see. So what is the option? Well, the other option is to announce to the programming language what type each variable is. So this is what is done in languages like Java, which we will see, and C, C++, and other things. You take a name and you associate a type with it upfront. So you declare, as it's called. So they're variable declarations. So you have things like int x. This says x is a variable I'm going to use, and I'm going to use it always as type integer. So notice the always. So now, unlike in the earlier case, you cannot take this int x and convert it to 7.5 because that is no longer valid. Right? So similarly, you can say for any type, you can say a is a type float and so on. So the main point is that this is now static. Static in the sense that the type of a value of a variable is fixed once and for all through its declaration, and you cannot change it just by assigning a different value to it. In fact, you are not allowed to ideally देखो तो बेसिकली assign मेरा non-compatible मैं ये values कहना चाह रहा हूँ given the type कि of the जब पाइथन में आप डिटरमाइन द टाइप बेस्ड ऑन द करंट वैल्यू, डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है? द टाइप ड्राइव्स फ्रॉम द नेम्स करंट वैल्यू, जैसे x इक्वल्स टू 10 माइनस x इस टाइप ऑफ इंट, क्योंकि यहाँ पे 10 माइनस x हो रहा है तो उसको पता है कि ये इंट में से माइनस हो रहा है तो ये भी इंट होगा. x इक्वल टू 7.5 माइनस, so now x is a type of float क्योंकि ये 7.5, it is an unutilized name has no type, an uninitialized name has no types. तो मतलब मान लो अगर सिर्फ मैंने x सिर्फ एक x लिया है तो उसका कोई टाइप नहीं. स्टैटिक टाइपिंग ऑन द अदर एंड क्या करता है कि आपको पहले से एसोसिएट करना पड़ता है एक टाइप नेम के साथ, जैसे कि need to declare name and their types in advance, such as int x, float a, cannot assign an incompatible value. जैसे x equals to 7.4 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अपन ने int दे रखा है उसको. ठीक है. So when people argue about which programming language is easiest to learn, so one of the arguments made in favor of Python is that it's very convenient because you don't have to do all this bureaucracy of declaring variables in advance. Now this is indeed true. It does cut down the syntax of the language and make it easier to approach for a new programmer because you don't have all these mysterious headings int x and float a before you start doing anything meaningful by way of computation. But it's not necessarily a great thing to have this feature in your programming language. So let's look at an example. So the first is what happens when you make a mistake by just accidentally mistyping a variable. So here is a trivial function which computes the list of factors of a given number n. So it starts with an empty list, factor list, and it runs through all the numbers from 1 to n. So remember that range goes 1 less, so n plus 1 for n. So it goes from 1 to n, and wherever you find a factor, something which divides n without leaving a remainder, you add it to the factor list. Now, all well and good, except there is a problem, and that is that in this update to factor list, we have unintentionally written factor list without an I on the left. So there is a typo. Now, this may be something which you catch or don't catch when you're reading it, but the point is Python will not complain about this at all because this is a perfectly valid Python program. It doesn't do what you intend, and it might take you a long time to figure out why it is doing something wrong. But essentially what's happening is that each time you come here, factor list remains empty because you've never really updated it. You take the latest factor and you assign factor LST, the spurious variable, to be the latest factor you have found as a singleton list. So at the end of this will basically have the largest factor, namely n. So this particular thing will always end up with this as the return value. Now,
This problem is there because Python has no way of knowing when you use a variable for the first time, whether it's a new variable or an old variable or not, because you have not declared it. And its type, remember, is inherited in some sense from the value it is associated. So that's really the problem, that if you don't announce in advance, you cannot catch errors like this, right? So that is an error. The other problem with this dynamic typing is the fact that you don't have a type if you don't have a value. Now, in most situations, you would not want this. I mean, there's no reason why you want to use an uninitialized integer or an uninitialized float anywhere. But if you have more complex things like these abstract data types like linked lists, right? So remember that in a linked list, we typically have a sequence of these nodes, right? And then we have our variable of, say, L pointing to this sequence of nodes. So these are all nodes. Now, if I could tell you in advance that L is of type list, so this is a declaration which we don't have in Python, then I could meaningfully assign L to be the value none to denote the empty list. But this is not possible in Python because I don't have this. So now in Python, if I say L is equal to none, then L has no type because none has no type. So I'm forced to actually use some kind of a dummy node and make L point to it and have some convention by which I say a node in which say the value is none denotes an empty list. So I have to really create, if you want to think about it, I have to create a non-empty list with some special property to denote an empty list. And this becomes very clunky to program with if you're used to programming it in a statically typed language where you can define the type and then associate a none or a nil value with that variable. So the second utility of using types, we said, was to align the program more closely to the concepts that we are trying to express. So this is an example we looked at the beginning of today's lecture. So we said if you're dealing with geometric objects like types, you might have two-dimensional points, three-dimensional points. So a two-dimensional point is just a pair of floats. A three-dimensional point is just a triple of floats. But if you think about them as new types, point 2D and point 3D, it becomes clearer to you as you're reading it which variables are doing what. And for the reader of the program or the maintainer of the program also it's easier. So here we're really using some kind of a synonym. We are not creating a new type as such. Okay? It's not like a stack with pop or push. It's just saying that we are renaming a particular thing, a pair of floats, to be point 2D. So when I read point 2D, it's more clear what the intent is than to read pair of floats. So this is just from a readability perspective. But as we know, we have also more complicated scenarios which we want, where we want to create these more complicated types with designated operations. So we have typically looked at things like stacks and queues and priority queues and so on, but there is nothing to prevent this from being at an arbitrary level of sophistication. So imagine that you're writing a large banking application. So within the banking world, there are some well-defined entities which you have to typically manipulate. So there will be bank accounts, of course, there will be customers, and then the types of operations that you do will also be classified into different things. There will be deposits, there will be withdrawals, there will be transfers, and each of them carries some data, right? When I do a transfer will consist of several things. It will consist of the time of the transfer, the account from the transfer to which it is transferred, the amount of the transfer, and so on. Even maybe the currency of the transfer. So these are all things which have their own associated data and possibly operations associated with it. So if you could create in this abstract data type world higher level types denoting these different objects differently, so you can have accounts and you can have customers which don't behave the same. So if you want to do withdrawals and deposits and so on, you cannot apply it to a customer, but of course you could apply it to an account. Similarly, if you want to update, say, the KYC details of a customer, you could apply it to a customer object, but not to an account object. So in this way, by having types which reflect the ground truth of what you're trying to manipulate in a more direct way, you can make your program easier to maintain and also guarantee correctness to make sure that you're not doing the wrong thing with the wrong object. So this brings us to the idea of doing wrong things. So one thing that static typing allows us to do is to do what's called static analysis. By just reading the code, the compiler is able to actually detect errors early. Now in anything that we do, the earlier we detect an error, the better it is. I mean, whether it's constructing a building or whether it is writing a program, if you find out the fault after the program is built or the building is built, then it's much more difficult to break it down and then to redo the thing than to find out right at the beginning there's something flawed with the design. So in every case, early detection of errors saves cost in real cost and also effort and time. Now the reason this is important is because there is a fundamental limitation of programs, which is that programs cannot check themselves. So this is the content of Alan Turing's famous result concerning the impossibility of the halting problem. So remember that we have compilers, right? So we have